If you want to score more in the essay paper, remember one thing, that you need to emphasize on three things. One is the structure of the essay, the other is the coherence, and then depth of thought. Remember that in the GS paper, you do not have the luxury because you have 3 hours to write 20 questions. In the GS paper, you need to focus on completion. However, in the essay paper, you have the luxury that, okay, for 3 hours, I have to write 2 essays, so therefore I can go into the depth. All right. Now, and in those abstract topics, you have to correlate and write multiple dimensions. You have to interlink whatever you have studied in your general studies. Then you have to relate that with the essay topic. You also have to relate your general studies with the current affairs thing. So all this is not possible by writing 1 or 2 essays. Now, the topics can be very diverse. The topics can be related to social issues. The topics can be philosophical. The topics can be abstract. The topics can be theme-based. With each and every written essay and feedback, you are also building up confidence. वीडियो को एंजॉय करने से पहले और देखने से पहले आपको ये बता दूं कि ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आप सभी करते हैं, और तभी करके ये पर्पस था वीडियो बनाने का कि फ्लो और कोहेरेंस के बारे में आपके साथ में कुछ बात कर सकूं, ताकि आप भी ये गलतियों को ना करें। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे लिखने में, तो ये वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी आपको मिले, ये पेड प्रोग्राम है, तो हमने ये ऑलरेडी रखा हुआ है, जहां पे 10 ऐसे के टॉपिक्स, उन टॉपिक के मॉडल एसेस ये आपको दिए जाते हैं। इन 10 के 10 ऐसे टॉपिक्स की इवैल्यूएशन मेरे द्वारा की जाती है। तो यानी कि यहां पे कोई आउटसोर्स्ड फैकल्टी या कोई आउटसोर्स कंटेंट राइटर नहीं होता जो कि एसेस को इवैल्यूएट करता है। बहुत क्रिटिकल तरीका है मेरा एसे को इवैल्यूएट करने के लिए, और वो तरीका बहुत लोगों को काम आया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे काफी बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम में एनरोल किया था, वो भी इंटरव्यू कॉल में भी उनको इंटरव्यू कॉल आया है, जो कि अब इंटरव्यू देने जाएंगे। एंड देयरफॉर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके ये बात जरूर है कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है 80-90 मार्क्स लेके आ रहे हैं 250 में से, श्योर शॉट 140 मार्क्स तक आप भी लेके आएंगे उसी कंटेंट का, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके जो कि ऑलरेडी आपके पास है, बट एक रिफाइंड फॉर्म में। ऑफ कोर्स आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको डिस्काउंट के लिए भी वहां पे कूपन कोड मिल जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं, मुझे कंटेंट भी चाहिए, मुझे वीडियो कंटेंट चाहिए, मुझे डिटेल्ड मेंटरशिप चाहिए, मुझे स्ट्रेटेजिक लाइव सेशंस देखने हैं, मुझे इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए एक होलिस्टिक कोर्स है ऐसे का। उसके लिए हमारा एक ऐसे फाउंडेशन कोर्स है, ये भी आपको 4999 पे मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स डिस्काउंट के बाद अब इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज हम टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स लगाते रहते हैं ताकि बच्चों को खरीदने में दिक्कत ना आए और अफोर्डेबिलिटी रहे। सो वी हैव टू कीप इन दैट थिंग इन माइंड। ये जरूर है कि ये दोनों प्रोग्राम्स सितंबर 2026 तक वैलिड है, सितंबर 2026 तक वैलिड है। तो यानी कि आप अगर अभी लग रहा है कि मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं 2 महीनों के लिए, बाद में प्रीलिम्स के टुवर्ड्स आप ज्यादा आपका रुझान आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली बाद में जाके आप प्री क्लियर करने के बाद तब ये एसेस का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। इनरोल आज कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, वैलिडिटी आपकी लंबे समय तक रहेगी। ऑलराइट, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। यूट्यूब पे हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। ऑलराइट, एंड देन it also depends at how well you can present your arguments and present them with a lot of clarity. That is something which is very, very important. Just a second. Yeah, that is something which is very, very important. That you are writing things down with clarity in mind. You're presenting your arguments very logically. You're presenting your arguments in a very substantial way. And you're making it sure that whatever you're writing is also connecting to the essay topic. All right, then practicing. You see, the more essay you practice, what happens is that you build up confidence. Which is very, very important for your success in the essay paper. Remember one thing, this is one paper which has no book. Essay ka paper has no book, and therefore what is the antidote to score more marks in the essay is practicing more essays, is writing more essays. And then of course you have to get them evaluated as well. What is the purpose of evaluation? After evaluation you will get to know that okay, where are you going wrong, where have you gone right, where are you going wrong, what are your strengths, what are your weaknesses. All these things are only being available to you only if you go through a rigorous evaluation as well. So if you think that I was very good in essay writing in class 10th, if you think that I was very good, in my, like board exams, I scored very good marks in English, I used to write a very good letter, I used to be excellent in comprehension and even in essay writing. Well, you see, the essays asked by the UPSC would not be that my best friend or ISRO mission or this mission or that mission. This would be something very substantial. The topics would be very abstract.
All right. Now, and in those abstract topics, you have to correlate and write multiple dimensions. You have to interlink whatever you have studied in your general studies. Then you have to relate that with the essay topic. You also have to relate your general studies with the current affairs thing. So all this is not possible by writing one or two essays. You need to write consistently. And by writing consistently, you will build up confidence. All right. Now, you might falter. You might falter while practicing. You might end up scoring very poor marks in the essay paper. However, understand one thing: with each and every essay paper, with each and every written essay and feedback, you are also building up confidence. Confidence of you doing better. So therefore, there is a concept called as incremental gains. And therefore, those gains will happen to you gradually if, again I repeat, if you're only consistently practicing the essays. Now, paper 1 will be essay. Paper 1 will be essay. Essay requires candidates to write 2 essays. Each essay would be 125 marks. Approximately 1000 to 1200 words you have to write the essays, like in 1000 to 1200 words. Now, the topics can be very diverse. The topics can be related to social issues. The topics can be philosophical. The topics can be abstract. The topics can be theme-based. If you want to score more in the essay paper, remember one thing, that you need to emphasize on 3 things. One is the structure of the essay. The other is the coherence, which is that you're maintaining coherence and order in your thought process, right from the introduction to the conclusion, and then depth of thought. Remember that in the GS paper, you do not have the luxury, because you have 3 hours to write 20 questions. Now, you do not have the luxury in the GS paper to go into depth. In the GS paper, you need to focus on completion. That, okay, I'm completing my 20 questions in the stipulated 3 hours. That has to be a first priority. However, in the essay paper, you have the luxury that, okay, for 3 hours, I have to write 2 essays. So therefore, I can go into the depth. However, not that कि आप 3 घंटे एक ही ऐसे लिखता रहे. वो इसका मतलब ये भी नहीं है, but you have the luxury to go into the depth. Now, a well-written essay can obviously boost your overall mains marks, and that can also impact on your ranking as well. Why to practice essay writing? Number 1, it will improve your ability in articulation. It will help you to translate your thoughts into clear, concise, and impactful writing. All right. So therefore, practice is very important in order to improve articulation. Let us assume one thing, that let's say that, hypothetically, I say that I have very poor social skills. You ask me that, sir, why do you have very poor social skills? I say that I don't know how to socialize. I say that I don't know how to put myself outside. When I go outside, I don't know what to talk. I can't talk with them. I cannot talk to them in the way they talk, for example. So then, what is it which you will suggest? You will suggest, sir, that why don't you try going and meeting people? Try to meet a smaller gathering rather than going into a bigger gathering. Try to meet a smaller gathering. Maybe you can improve your socializing skills. Maybe you can improve your ability to communicate with the people concerned over there. So you try to go in a smaller group. Let's say the group is of 2 or 3 friends or 2 or 3 people. And then gradually you can go in, larger groups. So that will help me in what? That will give me the confidence. That will give me the confidence that I can speak better. I can mix around with people better. And therefore, I find my presence in the crowd. Similarly, it is very important for us to understand the concept of practicing essays. Because you might say that I don't know how to write the essay. Sir, I'm totally blank. So what do I do about it? What do I do about it? You are blank today, so what do we do about it? You have to understand one thing, that every morning when you wake up, you will be blank. But you have to do something about it, don't you? Every morning and every evening when you're preparing and sitting and having dinner, having food and all that, you are living in a vacuum. Because you don't know that the next 1 year, 1.5 years or 2 years, whether you're going to make it or not. But still you're doing it. Why? Because कुछ तो करना ही है. बैठे तो नहीं रह सकते हैं. So therefore you have to sit up, you have to practice, you have to do that boring answer writing, you have to do that boring MCQ solving, you have to do those boring questions of CSAT, you have to practice those MCQs of history, of geography, polity, environment, etc. Now why? Because that is a part of your practice. If you don't practice, you will not improve. If you don't practice, you will falter. So similarly, you have to treat each and every paper in the UPSC with the same spirit, whether it is the essay paper or whether it is the GS paper or it is the optional paper. You should understand one thing: by writing consistently, you will improve your articulation. Time management को enhance करना है.
मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बनाए हैं एसे राइटिंग के बारे, आई एम श्योर आपने वो देख लिए होंगे, नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। मैंने वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करी है, टाइम मैनेजमेंट की बात करी है, तो वो सब चीजें ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं देखे तो प्लीज जाके देखें। प्रैक्टिस मदद करता है कि आप एसेस को विद इन 1.5 आवर लिख सकते हैं। अभी के लिए अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एक ऐसे लिखने में 2 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो आपसे अभी परफेक्शन नहीं मांग रहा हूं। अभी आज आपका पहला दिन है। अब एक 2 साल का बच्चा है, अगर उसने अब साल, सवा साल, 2 साल का बच्चा, उसने अभी अभी हाल ही में चलना शुरू किया है, तो उसके माता पिता ये तो नहीं कहेंगे ना कि बेटा 500 मीटर की रेस भाग के दिखा और तूने फर्स्ट आना, वो तो नहीं कहेंगे। तो देयरफॉर कोई आपको नहीं कह रहा कि आपने 500 मीटर की रेस पे जाना है। छोटे हो, बच्चे हो, मतलब अभी आपने शुरू किया तो 2 साल के बच्चे की तरह हो, कोई बात नहीं, 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, करो करो, करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आएगा इवेंचुअली, टाइम मैनेजमेंट आएगा प्रैक्टिस के साथ। और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ज्यादा भी नहीं मांग रहा हूं आपसे, आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल में 8 एसेज लिखने पड़ेंगे, 8 एसेज, 2 HLTs में, 3 FLTs में। तो 3 FLTs में, 1 FLT में 2 ऐसे होते हैं, HLT में 1 ऐसे होता है, तो 2 × 3 6 + 1 + 1 8। 2 HLTs है यानी कि 1 + 1, 3 FLTs है यानी कि 2 × 3, 8 एसेज है। चलो यार, आने वाले 10 हफ्तों में, 8 ऐसे लिख दो, यानी कि मींस के अप्रोक्सीमेटली आप 1 हफ्ते में एक ऐसे लिख रहे हैं या 12 दिनों में एक ऐसे लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 10-12 दिनों में एक ऐसा ऐसे का टाइम निकालना कोई बुरी बात तो नहीं है। अभी निकाल लो, 10 हफ्ते यानी कि 2.5 महीने, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 महीनों में 8 हफ्ते होते हैं, और 10 हफ्ते यानी कि 2.5 महीने। अभी सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और बोलो आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी या दिसंबर में शुरू करनी है, तो अभी टेक्निकली आप दिसंबर एंड तक और जनवरी मिड तक अपनी ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यानी कि प्रीलिम्स देने से पहले एटलीस्ट आपके मन में ये तो नहीं होगा ना कि मैंने कोई ऐसे लिखा ही नहीं था, कि जिंदगी में मैंने कोई ऐसे लिखा ही नहीं और जिंदगी में पहला ऐसे में लिखूंगा अपने प्रीलिम्स के बाद, ऐसा तो रिग्रेट नहीं होगा आपको। तो ठीक है, आप थोड़ा टाइम निकालने की बात है। अगर कोई और अभी कार्य नहीं है आपके पास, अगर अभी कोई आपने और अभी काम नहीं बांधा हुआ, अगर पढ़ने का ही अभी आपने कार्य लिया हुआ है, पढ़ने का ही अभी आपका कर्तव्य है और धर्म है, तो क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सोचते रहोगे कि ये करूं वो करूं, कुछ नहीं होगा, करो, सुबह उठो, करो, लिखना शुरू करो। एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एसे राइटिंग से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज आप एसे के टॉपिक को, फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को कोरिलेट करते हैं, डीक्लटर करते हैं, और उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं विद द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप कोई ऐसा एसे लिख रहे हैं जिसका जो थीम है वो थीम है रिजिलियंस या एंड्योरेंस, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे करंट अफेयर्स में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से, एंशिएंट हिस्ट्री में से, जो कि रिजिलियंस और एंड्योरेंस ओरिएंटेड पर्सनालिटीज की बात करेंगे। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, सती प्रथा अबॉलिश करने में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनको रिजिलियंट रहना पड़ा अपने एफर्ट्स में, एंड्योर करना पड़ा, बिकॉज उनको अपने सोसाइटी से, अपने समाज के लोगों से बहुत बैकलैश मिलता था। देन ऑन एंड ऑन वी कैन गो अबाउट गांधी, वी कैन टॉक अबाउट मार्टिन लूथर किंग। सो ऐसी पर्सनालिटीज आपको बहुत मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने जनरल स्टडीज में पढ़ा होगा, और उन पर्सनालिटीज को आपने कोरिलेट करना है इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऐसे टॉपिक के साथ। ऑलराइट, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, बाद में बात करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, बाद में बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस भी इनहांस होता है। जितना फेमिलियर होंगे आप डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, उतना ही आपकी एग्जाम की जो दिन वाली एंजाइटी है वो कम होगी, और आपकी कमजोरी को भी, क्या कमजोरी है वो तो पता लगे ना कि हमारी कमजोरी क्या है। अब अगर विराट कोहली को पता है कि वो ऑफ स्टंप पे कोई भी बॉल खेलेगा तो उसकी कमजोरी है, वो फिर भी खेलता है, फिर भी आउट होता है, उसको बार बार कहते हैं कि भी ऑफ स्टंप पे मत खेला करो, तो उसको पता है कि उसकी वो कमजोरी है। हर किसी क्रिकेटर की कोई कमजोरी होती है। ठीक है, गांगुली थे, गांगुली को जो शॉर्ट पिच बॉल थी वो खेलनी अच्छी तरह से नहीं आती थी, युवराज सिंह शॉर्ट पिच बॉल को खेल लेते थे, अब वो लेफ्टी थे। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी हो सकती है। आपने वजन कम करना है, लेकिन आपकी कमजोरी है कि आप आइसक्रीम देके पिघल जाते हैं, कि भी आपको आइसक्रीम बिना रहा नहीं जाता, तो कैसे आप अपने आप को अपना वजन कम कर लेंगे अगर आपको आइसक्रीम आपकी कमजोरी है, वीकनेस है। तो मींस आपको अपनी वीकनेस को एड्रेस करने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपकी वीकनेस है क्या। ऐसे कैसे इंपैक्ट करता है यूपीएससी जर्नी को। पहली बात तो हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, ऐसे सब्जेक्टिव है, दैट आल्सो अलाउज यू टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल एट द सेम टाइम। यहां पे कोई फिक्स्ड फ्रेमवर्क तो नहीं है
जो आपके मन में आता है, जो आपके मन में एग्जाम्पल्स आते हैं, एनेक्डोट्स आते हैं। अब आपके मन में एग्जाम्पल और आ सकते हैं, मेरे मन में एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं, फाइन। कोई ये तो है नहीं कि आपने मेरे वाले एग्जाम्पल्स ही देने जो आपको मॉडल एसेस में मैंने प्रोवाइड कराए हैं, नहीं, अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो दिस अलाउज यू टू बी वेरी क्रिएटिव एंड बी वेरी ओरिजिनल। सेकेंडली, आपके बाकी पेपर्स में नंबर ठीक ठाक आए हैं, एवरेज आए हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके 4 जो जीएस के पेपर्स हैं 250 मार्क्स के होते हैं, तो 250 इंटू 4 कितना हुआ, 1000 मार्क्स, इतने का होता है। अब मान लीजिए इस 1000 में से आपके 400 मार्क्स आए हैं, 400 मार्क्स आए हैं। देन आपके ऑप्शनल में मान लीजिए 270 मार्क्स आए हैं, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं। अब 400 और 270 बन गए 670। अब अगर इसमें आपके सिर्फ 100 मार्क्स एसए में आए हैं तो आप थोड़ा कट ऑफ के पास ही होंगे। लेकिन यहां पे आपके 150 मार्क्स आ गए हैं या 140 मार्क्स आ गए हैं, 40-50 मार्क्स या 30-40 मार्क्स ज्यादा आना, श्रुतिक आई कम टू यू, पहले लेट मी कंप्लीट एंड आई कम टू द डाउट्स। 30-40 मार्क्स ज्यादा आना विल इनहांस योर स्कोर लाइक एनीथिंग। और अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको पता है कि जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं ना, तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये आपकी रैंक को 50, 100, 60 ऊपर नीचे बढ़ा सकता है। सो डू नॉट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्कोरिंग हाई इन द एसे पेपर। प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट दैट फैक्ट। ऑलराइट, आई विल कम टू यू श्रुतिक, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट व्हाट आई हैव टू। ऑल्सो अब आप ऐसे लिख रहे हैं, अब आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे भड़काऊ कंटेंट डाल रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत एंटी गवर्नमेंट पोस्ट लिख रहा हूं या बहुत प्रो लेफ्टिस्ट पोस्ट लिख रहा हूं या कोई ऐसा प्रो लेफ्टिस्ट में कंटेंट डाल रहा हूं, तो यानी कि इंस्टाग्राम का कंटेंट देख के लोगों को आइडिया होगा कि यार ये काफी लेफ्टिस्ट है। बुरी बात नहीं है लेफ्टिस्ट होना, राइटिस्ट होना, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। यानी कि जो आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, मान लो कि मैंने कंटेंट डाला यू नो विच टॉक्स अबाउट के सोसाइटी में, हमारे गली में स्ट्रीट डॉग्स नहीं होने चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स को सच में वी शुड गेट रिड ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। That will also make people perceive that okay, he is not somebody who's compassionate towards animals, right? So whatever we speak, whatever we write, whatever we, for example, I am posting on Instagram too much about alcohol, you know, every time you see my Instagram post, it would be something related to alcohol, me having a good time with my friends sharing alcohol. So the perception would be that he's somebody who's a drunkard, right? So what we speak, what we write, what we wear, what we show, we are basically conveying to the people that that is what we are. Now understand one thing, in the essay paper, how would the examiner know that you have a very good analytical ability, that you are somebody who's very well balanced in your thought? Only by your writing skills. So essay writing will also reveal your true nature, your true values, your clarity of thought. And therefore, if you end up being very extreme, or if you end up writing too many bhadkau things or too many extreme things in the essay paper, what will happen? The examiner would think that he or she is not fit for this UPSC profile, and he's very extreme, because we are not wanting political revolutionaries over here, we are not wanting krantikari people over here, you have to bring kranti, that has to be through your work. You cannot be krantikari while writing. Nobody is asking you to be a krantikari while writing, right? So therefore your writing will also portray your personality. So remember one thing, that this is your first and last impression. At the end of the day, you have to engage the examiner. You have to make sure that the examiner is very engaged. You have to make sure that the examiner is hooked on to what you're writing. The examiner is convinced that what you're writing is making sense. So you need to make an impression. You need to create a strong impression and a strong impact in the mind of the examiner. And examiners, they're looking for what? They're looking for coherence. They're looking for stable and balanced arguments. And they're looking for that whatever arguments you have written, they are relevant. They are relevant to the topic concerned. If they're not relevant to the topic concerned, then well, tata goodbye. If they're not very relevant to the topic concerned, then it means that you're writing offbeat. You're writing off the track. You're deviating from the topic. Did you know that toppers often score 130 to 150 out of 250 in the essay paper, and that gives them a very big competitive edge? Now, how many essays to practice? So therefore, in an ideal situation, let's say that
you ask me that how many essays do we have to practice? Let's try to resolve this question as well. So write one full essay paper, which is 2 essays weekly under the exam conditions. Now this will come only when you're approaching your mains. I'm not saying it right now. So write one full essay paper, which means 2 essays you're writing weekly under strict examination conditions. This is ideally 3 months before mains. 3 months before mains, right after your prelims. This is that stage. And as of now, you can do 1 essay in 1 week as well, as of now. And then you have to focus on simulating the exam pressure and also have to perfect the art of time management. So target 8 to 10 full papers, which is 16 to 20 essays. This is during your mains. This is during your mains preparation. However, understand one thing, even if you're practicing, let's say 8 essays before the end of December 2025, you have done 8 essays, 8 to 10 essays, and then after your prelims, you then again become a part of the crash course and you end up doing another 10 to 12 essays. So means you have a sufficient repository of essays with you. So having 20 essays with you before you end up writing your mains, 8 in this year and maybe 10 to 12 next year, that would be more than sufficient. You would get an idea that where are you faltering. You would get an idea कि आपका essay में कमजोर पार्ट क्या है. किसी का conclusion कमजोर होता है, किसी का explanation कमजोर होता है, किसी का coherence कमजोर होता है, किसी का transition अच्छा नहीं होता है, किसी को सब हेडिंग देने में प्रॉब्लम आती है, किसी को टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आती है, किसी को टॉपिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है. तो इतने एसेज लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं. एंड देन द प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एसे प्रैक्टिस. प्रैक्टिकल टिप्स, चूज डाइवर्स टॉपिक्स. फिलोसफिकल टॉपिक पे भी लिखो, सोशल इकोनॉमिक टॉपिक पे भी लिखो, करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक भी लिखो, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे भी लिखो. फॉलो अ स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. बॉडी में मल्टीपल सब हेडिंग्स बहुत जरूरी है. फैक्ट्स और एग्जांपल्स का इस्तेमाल करो, डेटा का इस्तेमाल करो, कोटेशंस का इस्तेमाल करो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का इस्तेमाल करो. ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, फिक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड आई विल कम टू यू श्रुतिक, व्हाट यू हैव रिटन. आई हैवंट read your message. I'll come to you as well. Get feedback. Now feedback, get it evaluated by mentors. So you have me by your end. You can also get it evaluated by your friend circle. If you think that there is some senior elderly person in your friend circle who has also appeared for UPSC Mains, you can also seek a feedback, a suggestion from them. But try to, whenever you write the essay, as of now I'm not saying, but let's say that after this year, after December, after the next 3-4 months, let's say next year after your prelims, when you will be writing your essay for your practice, appearing for your mains, then at that time try to simulate the exam conditions. Practice writing within 1.5 hours per essay. That has to be very important. Start writing today. See, essay writing is a skill. It is not a talent. It is a skill which can only improve with practice. Regular practice will enhance the clarity, your structure of the essay, and also give you a lot of confidence to present your arguments very coherently, maintaining the flow of the essay as well. Start small. It is not very important that you have to start very big. I always encourage everyone that if you have to do 10 things today and you're burdened, oh my God, how will I do 10 things? You wake up in the morning, 7 o'clock, oh my God, today I have to do 10 things. How will I do it? You see, I have seen that in my personal life as well, in my professional life as well, that the day I plan that I have to do this, I have to do this, I have to do that, that is the day when I'm not able to do anything at all. But the day I plan that, okay, there are not 10 things which I have to do, I have to do 2 things and that's it. Today I have to do 2 things and that's it. I will be able to do those 2 things very meticulously. What matters? Either I end up doing nothing today and then tomorrow again I worry, oh my God, I have to do 10 things, again nothing. Then day after tomorrow, okay, I have to do 10 things, oh my God, I'm not able to do it. ये करते करते मेरा हफ्ता, 10 दिन, 2 weeks ऐसा निकल गया. Rather than मैंने सोचा कि यार, chuck it. I want to do 2 things today. I want to do 2 things today. I will do it. And I do it. So which means what is more important is that you're doing a certain task, a certain thing consistently, and we are not asking you to do 10 things today. If we end up asking you that do polity, do history, do geography and also write 1 essay, it is not possible on a daily basis. And I'm not asking you to write essay on a daily basis as it is. Start small. Well, even in essay writing,
You think that you can't write 1000 word essay, write a 300 word essay, write a 500 word essay, write a 600 word essay, then write an 800 word essay. Start small. But what is more important? You're starting. What is more important? You're starting. See, understand one thing. Of course, people say that don't have the average mindset, have a winner mindset, have a player mindset, win, don't just focus on, this and that. But what I say is that everybody wants to be a winner. Fine. Nobody wants to invest in the process. Also, nobody understands that the path which you have to follow in order to become a winner is not a very easy path. And therefore, you need to train yourself. You need to train yourself and you need to give small milestones to yourself. If you're able to achieve those smaller milestones, only then will you be able to achieve bigger milestones as well. I hope I'm making sense. So start small, day 1 to 3, write a 200 word paragraph. Let's say the topic is importance of education or my vision for India, right? For example, focus on clarity over here. Focus that this 200 word paragraph is only focusing on clarity, not perfection. In this 200 word topic or essay or answer, I'm not asking you that you have to write everything under the roof about education. Let's say a very simple topic, importance of education. You're writing a 200 word paragraph. Maybe you're trying to relate it with some example related to Mahatma Gandhi or Rabindranath Tagore, or maybe the views of Gandhi or Tagore on education, for example. Day 4 to 7, increase it to a 500 word short essay. All right. Use a basic structure, introduction, body, conclusion. Then use a timer. Use a timer 30 to 40 minutes per session, so that these quick intervals, in workout, in gymming, there is a thing called as HIIT, high intensity training, high intensity interval training. Now, for example, let's say in the morning, I am hitting the gym at 9 o'clock. I want to be in the office by 10:30. So I want to focus that how can I do in 40 minutes my gym, so that I'll be able to have time for my shower, and then I'll be able to reach my office by 10:30. So what do I do is I focus on 40 minutes. And in those 40 minutes, I will focus on a very intense workout. Rather than doing a 2 to 3 hour workout, or rather than thinking that, oh my God, I think without 2 to 3 hour workout, I don't want to go to the gym. So therefore, let me go to the gym the day when I have 2 to 3 hours to spare. You will never have that time to spare. So how do you do that? You break your time. Let's say you want to do gym 2 to 3 hours a day, you break your time. You do 40 minutes in the morning, maybe you do 1 hour or 1 hour 20 minutes in the evening when you have more time after your work, whatever it is. So the point is that you break your time. You break your time, and in these short intervals, you understand and focus on productivity. You focus on productivity creation. You focus on being more productive in this limited set of time you have. 40 minutes I have, okay, let me do one thing. Let me write a quick 400 word essay. All right. Now, dedicate 1 hour daily to answer writing. Now, this of course will come only after you have attained a certain level. I'll come to you, Kaustubh. I'll come to you. All the questions, I will come to the questions later on. Let me complete what I have to do. Now, dedicate 1 hour daily to writing practice, which means that preferably you can do your answer writing in the morning when the mind is fresh. Let's say that you want to write 3 answers of GS and 1 small essay for 400 words or 500 words. Try doing it in the morning, because when you're up, when you're awake, that is the time when you're more fresh. Create a weekly schedule, 3 days for short essays, 2 days for full length essays. Now, this is something which you can do, which you can curate depending upon your preparation level. This is not for now. This can come at a later stage before mains. Right now, you're not giving mains immediately after 2-3 months. You have time for that, right? Maintain a notebook whereby you can just note down important points or important ideas which you have come across from the newspapers, the Hindu or the Indian Express or any magazine. Just important ideas. That's it.